Are we live? Just checking in. Are we live? Just checking in. Are we live? Okay. Cool. So very good evening to all of you. Those are present. And today we'll be discussing on the part two of dynamic programming. Okay, so we'll be discussing it via questions only, as we have been doing. Uh, what are the two questions that we'll be seeing today? Those will be house robber and house robber 2. Okay, so just let us write here. The two questions are house robber, and the second one will be house robber 2. Okay, this is lead code hashtag 198 and 213. 198. So, is my voice and all clear? I hope that is. Yeah, okay, fine. Okay, so before starting, let's quickly get a short recap of what we have been doing. So, in dynamic programming, we have learned about, uh, you know, getting a recursive approach of uh, of the problem that we need to solve, and that should like have the optimal substructure in it. Okay, so the optimal sub problems also we talked about. We talked about the recursive solutions that we can build and how we can store it in a data variable. Okay, and this in the storage part we checked about memorization, tabulation, and in some approaches we also use variables, right? So these were the things that we discussed on memorization. How do we do that? We initialize a DP and suppose that every element now is -1. And then we keep on checking that if the element is -1 or not. If it is still -1, that means we haven't stored anything in the DP yet. But if it is not -1, that means that we have already calculated it. And so we put that value in front. Okay. In tabulation approach, we have a tabular format of a data structure where if we keep on calculating, we keep on storing at the same go. Okay. This brings back the old days. Hello, compiled by Abhi. I think you are from HITK. Okay, fine. Uh, so this was the thing which we learned. Then we had this particular question, minimum cost climbing trees. This is the same question, I guess. Yes. Then the part two of that, where we were asked to calculate cost. Okay. First one was step, this one was cost. Now we will be learning about these particular questions, the approaches that we'll be following to solve this. Let's quickly get on to the question and just paste it there. Fine. So what this question tells us is, you are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security systems connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. What it means is, um, think these are the house plots, okay? And if you're robbing onto this particular house, say you are a robber and you decide that you will rob this house. Then according to the condition, if you start robbing this house, then the police will be notified. So you can't like if you choose this, you can't choose this. Okay. So this can't be chosen. Now you have the option to rob this particular house, but if you choose to rob this, then this won't be chosen. Okay. And similarly, now instead of this, if you like choose to rob this particular house, then you will be like bound not to rob this and this one. Okay. So adjacent houses cannot be robbed at the same time. If you're getting my point. Okay. Now, if you consider this particular example, 1, 2, 3, 1.
So you see, if you decide to rob on to one, okay, let's complete the question first. Given an array nums representing the amount of money of each house, return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. So if you choose and rob one, then you are compiled not to choose two, but you can choose three or four. Okay. So suppose you chose one and then you chose three, then you had a profit of four. Suppose you chose one and this was nine. Then what was the best option to choose? Was it one and three? That would give you four as the profit, or was it one and nine? That would give you 10 as the profit. So of course, one and nine would be a better option. So you are trying to like, I hope you're getting why we are considering this particular situation. It's not that we if we can like directly rob all the odd houses or all the even houses. Like people may think कि हमने पहला किया तो फिर थर्ड कर लेते हैं फिर फिफ्थ कर लेंगे ऐसे करके. Suppose if there is a house with a greater amount in an even position, then you'll have to consider this instead of this, right? So this is the basic of that particular question. Now we have understood the question. Let's see why we can approach this via dynamic programming. It is because of the fact that it has overlapping subproblems. Why? See, 1, 2, 3, and 9. You choose 2, then you are, if you choose 2, then you can't choose 1 and you can't choose 3. But this is in the case you choose 2. What if you choose 3? Then we won't be able to choose 2. So you're seeing this part is overlapping, right? And when things overlap, you can have uh like an intuition to use dynamic programming. Okay. I'm an alumni and got the notification from YouTube and phone. Hello, Bhaiya. It's great to see you here. Okay. So this part is clear that we'll be using the dynamic programming approach, but how? If you remember, I have told certain steps to break down the problem into dynamic, like to understand the recursive equation that we'll be following. Okay. So in order to break down the problem, what we are doing is we consider the smallest sub problem that we can have. In this particular case, the smallest sub problem that we can break this particular problem into is given you have only one house. My drawing is very bad. Just consider you have only one house. So you will of course rob that particular house. Okay. So you rob that particular house. So one, if there is only one house, so you take one into consideration. Now suppose you have two houses. What you will do if you had option कि तुमको सब maximum rob करना है but you are given two houses. So you will of course rob जहाँ पे ज़्यादा पैसा हो. If this is 10 and this is 100, so you'll choose 100. If this is 100, this is 10, you'll choose 10, of course. Right? So if given two houses, you will be choosing maximum of both the houses. ठीक है? तो हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके चेक कर रहे हैं. पहले वन के लिए चेक किया, अगर एक रहा तो एक को हम लोग ड्रॉप करेंगे सीधा. दो रहा तो हम लोग मैक्सिमम पे जाएंगे. बात आता है अब जब तीन रहेगा तो क्या करेंगे. So now we have three houses. Now there are two conditions that arise. Suppose you choose the middle house or you choose these particular houses. Is there any more conditions that we are left with? No. Okay. So इसमें दो ही कंडीशन है. अभी हम लोग इसमें थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच इंड्यूस करते हैं. And now you will be able to write the algorithm very quickly, and this is what you just need to do. You have to check if nums का size ठीक है इक्वल टू वन. मतलब कि क्या उसको रॉब कर लो. सो ऑफ कोर्स यू रिटर्न नम्स एट जीरो. ठीक है. एल्स अगर साइज टू है, ओके, you know this is equals to 2. So what you do is you return maximum of nums of 0 comma nums at 1. You're getting my point, right? अभी डीपी का अप्रोच आएगा तो इसके बाद वाला में बेस कंडीशन सेट हो गया. बट इसके बाद क्या, जब तीन हाउस रहेगा, सो सी यू हैव 1 2 and 3 एंड सपोज यू आर एट दिस पर्टिकुलर हाउस. ठीक है, दिस इज द आयत हाउस. सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे वही दो कंडीशन है. या तो हम अगर इस हाउस को लेते हैं तो हम इट्स बेटर टू लीव, मतलब ये हाउस तो हम लोग ले नहीं सकते. दिस कांट बी
considered. So we take this and this, right? Or we take this, इसको दूसरा मार्क करो y, ठीक है? तो दो ही ऑप्शन है. अगर हम लोग सिर्फ y वाला ऑप्शन कंसिडर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नम्स ऑफ I माइनस वन, ठीक है? नॉट नम्स एक्चुअली. मान लो वो पूरे सॉल्यूशन को हम लोग एक डीपी एरे में स्टोर करते हैं. तो अगर हमें हमें ये वाला पार्ट कंसिडर करना है और तुम करेंटली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, सो व्हाट इज दैट पार्ट, लाइक व्हाट इज द आंसर और रादर द एलिमेंट इन दैट पार्ट? दैट इज डीपी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है? अभी this is the case when we are considering the mid element. Now what to do if we want to consider these both? So what are you doing? Either this or dp of I minus 2 plus you are currently at this particular element. So the answer for this particular element hasn't been stored yet, and hence nums of I. But अभी इन दोनों में से ये दो conditions है, but consider क्या करना है? जो maximum हो, right? बस ये है तुम्हारा रिकर्सिव फॉर्मूला बोलो या इक्वेशन बोलो, जो भी. तो जो भी कॉस्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस वन, आइदर यू आर कंसिडरिंग दिस, और डीपी ऑफ आई माइनस टू प्लस व्हाट इज हियर. तब तुम वहां स्टोर करोगे. थोड़ा सोचो. दिस इज व्हाट हैज टू बी डन, राइट? ओके, नाउ वी विल बी गोइंग ऑन विद द कोडिंग पार्ट एंड वील फर्स्ट सी विद टैबुलेशन अप्रोच, ठीक है? तो टैबुलेशन में ऑफ कोर्स you'll be creating a डीपी वेक्टर, ठीक है? उसका जीरोथ एलिमेंट को क्या डिस्कस किया कि अगर सिर्फ एक ही हाउस है तो यू नीड टू रॉब दैट, सो दिस शुड बी नम्स ऑफ जीरो, ठीक है? बट द फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी मैक्सिमम ऑफ नम्स एट वन कॉमा नम्स एट जीरो, ठीक है? और उसके बाद तुम ऑफकोर्स एक लूप लगाओगे आई इक्वल्स टू टू से, जब तुम सारा डीपी एरे के और अदर डीपी वेक्टर के एलिमेंट्स को fill up करोगे, and you'll write that dp of I is equals to this particular formula that we came up with, right? So let's see how do we code this. This is the problem. So we simply write that if num.size equals to 1, we are going to return nums and return nums at 0. That's the maximum profit that we can attain, right? अभी डीपी का साइज ये नहीं है, तब हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं. लाइक in order to make these two as the base condition, size at least 2 तो होना चाहिए, इसलिए ये वाला कंडीशन लिखना पड़ता है अपने को, ठीक है? नाउ यू आर जस्ट हैविंग अ वेक्टर इंटीजर dt, साइज क्या होगा? ऑफ कोर्स नम्स डॉट साइज के बराबर, देन dp of 0 is equals to nums at 0, dp at 1 is equals to maximum of nums at 0 comma nums at 1, ठीक है? तो ये हमने क्या सेट किया? बेस कंडीशन सेट किया. अब वापस से वो लूप लगाएंगे फॉर इंट i is equals to 2 से nums dot size तक प्लस प्लस. And we are storing this as dp at I. Why is p not working? Yeah. This is equals to maximum of dp at the previously stored element, dp at the element 2 steps back plus the present element. रिटर्न क्या करोगे? dp at nums dot size minus 1. We need to return the maximum profit ना. मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? जब तुम लास्ट वाले हाउस तक अप्रोच करके चेक करोगे. In this particular condition, if there are 3 houses, this is what you'll return. यहाँ पे maximum stored होगा. If there are 4 houses, this is what you'll return, and so on, right? I hope you're clear with this.
Let's see if this works. I hope this will. Mhm. Oh, okay. Sunday. Mhm. Now, is this happening? Yep, this works. Okay. We'll just be pasting the code here. तो ये तो हो गया tabulation approach, which we are storing it in tables, rather a vector. Okay. Time complexity, if you have to see, you are just like storing it in a single go, right? You're traversing the uh, vector once. यहाँ पे वो वेक्टर जो हमें प्रोवाइडेड है तुम हर एक आई के लिए ट्रैवर्स कर रहे हो स्टोर कर रहे हो सो दैट्स क्वाइट सिंपल that the time required in this particular case was order of n. Here the space complexity is also order of n because of course you are having a DP array. Okay. Now moving on, we are having memoization approach. इसमें भी अपने को एक डीपी वेक्टर तो लगेगा. एक काम करते हैं यहाँ पे लेते हैं प्राइवेट वेक्टर. ठीक है. Private and this will be accessing that particular vector in the class. And then we write dp.resize and resize it to nums.size. Haha, nums.size. Initialize each and every element to -1. ठीक है. And then we are returning उस पर्टिकुलर जो फंक्शन कॉल करेंगे अपन एक. ठीक है. दिस मतलब अगर तुमको पिछला कोड्स याद हो, रुको दिखाता हूँ. मेमोराइजेशन कहाँ गया. This particular thing. So see, you had a vector dp and then you were having a function, right? यही करना है अपने को. एक सॉल्वर या कुछ भी फंक्शन ले लेना है. So in this case, let's call it solver only. Okay. You return nums जो है हमारा और किस इंडेक्स तक जाना है. ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इंडेक्स स्टोर होगा. So we'll returning nums.size -1. इस इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न करना है अपने को. ठीक है. And so you write in solver vector. And so was there a stream break? Let me check if there is. One second. Yeah. And then we are having an index here, right? In bold. Abhi, the base conditions of recursion that if the index is 0, what are we returning? We simply return nums at 0. Then we have if index is I equals to 1, then you return maximum of nums at 0, comma nums at num. ये हो गया. अभी अगर हमारे डीपी में ऑलरेडी चीजें स्टोर्ड है, so if dp of that particular I is not equals to 1, -1 rather, so we'll be returning dp at I.
अभी यहाँ पे रिकर्सिव कॉल होगा, राइट, एंड दैट इज dp at that particular I will be equals to maximum of solver. What are we sending? Nums comma I minus 1 comma solver nums at I minus 2 I minus 2 plus nums at I. एक बार देख, समझ में आया? ये सेम चीज है जो पिछले बार ही लिखा था, सिर्फ इस बार तुम मेथड के नाम से लिख रहे हो, उस बार डीपी के लाइक पर्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से लिखे थे, राइट? So solver nums with I minus 1 and then solver nums with I minus 2 पे जो वैल्यू स्टोर्ड हो उससे, बट दिस टाइम यू आर एडिंग द प्रेजेंट इंडेक्स, राइट? बेसिन से कुछ रिटर्न करना है, सो यू रिटर्न डीपी एट आई. आई होप दिस विल वर्क. Seems fine. Uh-huh. Okay. See if this does work. Fine. इस प्रॉब्लम का एक और अप्रोच है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज क्वाइट एफिशिएंट, एंड ऑफ कोर्स दैट इज यूजिंग वेरिएबल्स जो हम लोग पहले भी करते आए हैं. टाइम कितना हो रहा है? 23. ओके फाइन. सो time complexity, of course, this is also order of n. Space complexity is also order of n. No problem in that. We are using recursion. Fine. अभी ये वाला पर्टिकुलर पार्ट अगर किसी को याद हो, दिस वन, ये वेरिएबल अप्रोच, तुम ऐसा कुछ एक नंबर लिख रहे होते हो. हाँ, दिस ये एक्स और वाई करके यहाँ पे भी कर सकते हो चीजें. हाउ, लेट मी जस्ट शो क्विकली. सी, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि क्या था वो, क्या था एग्जाम्पल, इसको लेते हैं, ठीक है? 27931, 27931. लेट अस स्टार्ट विद अ जीरो. ठीक है, कि जब एक रॉबर आता है, he has no amount of money, so you are initializing it with zero. Then when he comes to the first house, you are robbing that particular house. ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है हमारा, ये तो रॉब करना है. When you come to the second house, you are robbing the maximum of these both. So suppose x is here, y is here, so you are robbing the maximum, that is 7. ठीक है. Now when you move on to this particular position here at 9, then what you are seeing, you are having maximum of what? Either you are taking 7 that is currently at y, or you are taking x plus nums at I. है ना? देखो सोचो, अगर x और y यहाँ से इनिशियलाइज है, तो तुम मैक्सिमम ऑफ y, जो कि इसका एक पहले वाला इंडेक्स था, और x प्लस नम्स ऑफ y, ठीक है, ये कर रहे हो क्या? और उसके बाद क्या करना होगा? यू विल हैव टू शिफ्ट दीज. इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यू विल हैव टू शिफ्ट दीज and make y come here. So let's say this is current. जैसे पहले किया था exactly same है. So now y will become current. So y comes here. First let's x become y. X is equals to y. So x comes here, and now y comes here, and then current will go here. ठीक है. Y is equals to current. ठीक है, करंट प्लस प्लस कर सकते हो, और लास्ट में जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट का वैल्यू रहेगा, वो तुम लास्ट में रिटर्न कर रहे हो क्या? है ना? कूल. लेट्स सी.
हम्म, क्या किया कि एक x है जो कि 0 है, y है जो 0 है, ठीक है। For int I is equal to 0, I is less than 1, size plus you are having a current, okay, so यहाँ पे initialize, although तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, no problem. Maximum of x, क्या लिखोगे, current is equal to maximum of y plus x, comma y, comma x plus, uh, then you are moving x to be y and y to be current. करंट को आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट लूप में ऑलरेडी मैक्सिमम चूज होता है, तो मैक्सिमम चूज करके अपडेट होते जाएगा एंड यू आर रिटर्निंग करंट। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जीरोथ जब सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, सो इन दिस व्हाट यू आर डूइंग हियर इज करंट इज मैक्सिमम ऑफ y is currently 0, ठीक है। what I'm saying is मान लो सिर्फ 3 है हमारे कंसिडरेशन, so y is 0 and x plus nums of y will become 0 plus 3, that will become 3, है ना। और फिर इसके बाद तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड देन दिस विल गेट, like this loop will exit and you will return current, right? Let's see if this works. क्या हो गया भाई, अच्छा, since you are returning current outside so you will have to declare the scope, right? Okay. Fine, I guess this will get submitted. Brilliant. दिस इज अ गुड अप्रोच बिकॉज यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लग रहा, तुम कुछ एरे नहीं ले रहे हो, तुम कोई स्टैक में स्टोर नहीं कर रहे हो कॉल बैक्स, ठीक है। सो दिस इज इट। In this particular case you have a time complexity of order of n but space complexity of order of 1, that is constant, right? So we are done with this particular question. We have seen the tabulation, the memorization, the variable approach. Moving on, we have the house robber 2. What's the difference? Let's see. This is um, copying this particular question. Let's see. So you're a professional robber planning to rob houses along a street that's quite the same. The difference here is each house has a certain amount of money stashed. All houses at this place are arranged in a circle. This is where the difference lies. पिछले बार हमारा एक linear fashion में house stored था. Here is it's in a circle. That means the first house is the neighbor of the last one. Meanwhile, adjacent houses have security systems connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. The conditions are same, but the arrangements is different, right? The arrangement is different. That says you have a particular house here, you move on, you have a particular house here, you go here, you have a particular house here, and these are in a circular fashion. ठीक है, cyclic है. So if you choose to rob X, then you are like you are compelled not to rob this particular house and this particular house. ठीक है, सिंस देयर इज अ साइकिल, तो तुम लास्ट हाउस और फर्स्ट हाउस को एक साथ कभी रॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर 4 का साइकिल रहता है ऐसा कुछ, 2 3 4 5 4, तो इन दोनों को साथ में रॉब नहीं किया जा सकता। गिवन द कंडीशन, अगर तुम इसको रॉब करते हो इसको रॉब कर पाओगे बस, और इसको रॉब करते हो तो सिर्फ इसको रॉब कर पाओगे, ठीक है। 5 में और बेटर समझ आता है, 2 3 4। बहुत लोग होगा इसमें सोचेंगे कि सारा ऑड हाउसेस और इवन हाउसेस को चेक कर ले, बट डायरेक्टली सिंस इसमें चेक करने जाओगे तो एक प्रॉब्लम है, मतलब you'll have to implement a certain a different thing, we'll see what। अगर तुम इसको अप्रोच लाइक रॉब कर रहे हो, so you're compelled rob to rob this and only this,
देन यू कांट ड्रॉप दिस अगेन। तो अगर तुम देखोगे कि ऑड है या इवन है तो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते, राइट? सो आइदर दीज बोथ, और इन दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव एन ऑप्शन दैट आइदर दिस विद दीज बोथ। ये ग्रीन वाले में भी ऑप्शन है कि अगर तुम ये चूज किए हो तो यू कैन चूज आइदर दिस और दिस, बस ये दोनों नहीं ले सकते हो बस, ठीक है? तो ये दोनों ले सकते हो, एंड सिंपल, आई गेस यू हैव गॉट द क्वेश्चन, फाइन। तो सोच के देखो इसका कुछ अप्रोच अगर दिमाग में आ रहा हो, दैट हाउ डू यू अवॉइड robbing the first and the last house at the same time. There is a very simple approach, but हाँ इसको थोड़ा दिमाग में लाने में टाइम लगेगा. What we are doing is we are making two vectors, ठीक है? एक वेक्टर में क्या करेंगे, जीरोथ हाउस से स्टार्ट करो, और देन तुम जीरोथ हाउस से स्टार्ट करो और एंड करो कहाँ पे, नम्स डॉट एंड -1 पे, ठीक है? क्योंकि तुम ये दोनों नहीं रॉप कर सकते. अगर तुम जीरोथ हाउस रॉप कर रहे हो तो नम्स डॉट साइज वाला हाउस पे जो आता है, दैट इज, अगर वेक्टर में एक्सेस करने का ट्राई करो, नम्स डॉट एंड पे आएगा, जो एंड ही लिखते हैं ना, बेटर है. सो इफ यू टेक अ वेक्टर हैविंग दीज बोथ एलिमेंट्स, ठीक है, जीरो और नम्स डॉट एंड, तो यू आर लाइंग इन अ पॉसिबिलिटी that you can rob the first house as well as the last house, which we don't want. So हम एक काम करते हैं, अगर जीरोथ हाउस लेते हैं तो हम लास्ट का हाउस हटा के बाकी सबको एक वेक्टर में स्टोर करते हैं. और दूसरा वेक्टर क्या करेगा, एक और ऑप्शन है ना, कि तुम जीरोथ हाउस मत मत लो, बट फर्स्ट हाउस लो, और एंडिंग तुम करो लास्ट हाउस से. एक वेक्टर ये हो सकता है. तो ये दोनों वेक्टर रखो, एंड देन यू कैलकुलेट कि इससे मैक्सिमम रॉबरी कितना हो सकता है, इससे मैक्सिमम रॉबरी कितना हो सकता है, ठीक है? और देन फाइनली यू कैलकुलेट इन दोनों से मैक्सिमम रॉबरी कितना हो सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? It may seem difficult, but it is quite easy. Why? Because we just are storing things into two vectors, और फिर हम लोग सेम चीज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, इसके अकॉर्डिंग अलग, बस इसके अकॉर्डिंग अलग, ठीक है? लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट. सबसे पहले तो अपने को दो वेक्टर चाहिए, बट ये कंडीशन जो है, दैट हैज टू बी देयर, कि अगर एक साइज का ही है तो सिंपली रिटर्न कर दो. वेक्टर वेक्टर क्यों बनाएंगे, वेक्टर बना नहीं पाओगे ना. इन वेक्टर मेकिंग यू नीड द फर्स्ट इंडेक्स, राइट? यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो यू हैव टू रिटर्न इट, और एल्स यू मेक वेक्टर इन से dp1. कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से कहाँ तक, नम्स डॉट एंड. डोंट राइट जीरो, यू राइट नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड. अगर बिगिन ले रहे हो मतलब जीरो इंडेक्स ले रहे हो तो लास्ट का नहीं ले सकते, राइट? एंड यू जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट, थोड़ा कुछ चेंजेस dp2, बट अब क्या करेंगे, पहला इंडेक्स लेंगे और लास्ट से ये हटा रहे, क्योंकि हम लोग अब कंसिडर कर सकते हैं लास्ट इंडेक्स, ठीक है? व्हाट वी आर रिटर्निंग, रिटर्न solver, rather maximum of solver nums comma. इस बार हम लोग को वेक्टर भी भेजना पड़ेगा ना उसमें, सो dp1 भेजो, बिकॉज वाई, बिकॉज तुम सारा चीज उसमें स्टोर कर चुके हो ऑलरेडी वेक्टर में, तो तुम नम्स से नम्स क्यों भेजेंगे अब हम लोग, राइट? सो वी आर सेंडिंग dp1 एंड dp2. और सॉल्वर फंक्शन एक काम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं, कंट्रोल सी. दिस, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, टैबुलेशन वाला लेना होगा, नहीं तो तुमको इंडेक्स पास करना होगा. आइदर यू टेक द टैबुलेशन वन और यू पास द इंडेक्स, ठीक है? हाँ, इसको पूरा को सॉल्वर में लिख देंगे, ठीक है? You are making a solver.
तुम वापस से अगर नाम दे दो नम्स तो हम लोग चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नम्स देके ही कर लेंगे काम। टेस्टिंग प्लेस, चेक वंस दिस इज अ सॉल्वर फंक्शन दैट रिटर्न्स डीपी ऑफ नम्स विद साइज -1। यहाँ पे सब चीज सेम हो रहा है। ये जो dp1 यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे हम लोग वापस से नम्स के नाम से रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर का पार्ट तुमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये dp1 के लिए अलग से चेक करोगे, dp2 के लिए अलग से चेक करोगे, और फिर दोनों का मैक्सिमम निकाल लोगे। फाइन, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। व्हाट्स द प्रॉब्लम? यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड, व्हाई सॉल्वर। उप्स, ओके वेट, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अरे ब्रैकेट का क्या दिक्कत है भाई? This is one function, this is another function. फाइन, ठीक है। कुछ करना नहीं पड़ा, बस ये चीज है इसमें डिफरेंस, कि तुम दो वेक्टर बना के दोनों को इंक्लूड होने से बचा रहे हो, राइट, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को, एंड देन यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम रिटर्निंग। फाइन, quite simple, this will get submitted, I guess. Let's see. So let's just copy and paste it here. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखने जाओगे, सो इस बार क्या हो रहा है, ये चीज सेम है, राइट। आई मीन एक पर्टिकुलर वेक्टर में अगर तुम इन डेप्थ देखो, तो तुम ये वाला पास नहीं करके बाकी सब कर रहे हो, दैट इज ऑर्डर ऑफ n-1। और सेकंड वाले में क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करके बाकी सब कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो n-1, ठीक है। रादर इसको और इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी भाई, दिस इज की इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्लूडेड है। इन द सेकंड केस इट इज की तुम 0th इंडेक्स को इंक्लूड कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू दी सेकंड लास्ट इंडेक्स। दोनों में ऑर्डर ऑफ n-1 लग रहा है, यू कैलकुलेट, मतलब एड ऑन करके, यू आर सेफ टू से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big O of n, okay. The space complexity here is big O of 2n, of course, because तुम दो बार ये चीज यूज कर रहे हो, बट asymptotically देखोगे तो ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हो, है। So I guess we are done for today. We had only two questions to discuss. If there is any problem or any questions that you have to ask, you are free to ask in the community, or you can like uh, text me, get my number from the community. You have all the links attached in the description. See it. We have drives, we have Notion. Okay, you can get updates from there. Okay, then we have saved quite a few time, but we don't have anything to do. So I guess we are good to do for today. Okay. Till then, see ya. I guess we have one or two more classes that we'll see. Okay. Bye bye.